हेलो गाइस, आज हम ये देखेंगे कि हाउ डू वी गेट वेरियस। आज हम लोग बेसिकली थ्री मूवमेंट्स को देखेंगे जो कि हम लोगों को टैली से निकालना है। एक तो मेरा ऑर्डर मूवमेंट कैसे आता है, व्हाट इज द ऑर्डर मूवमेंट का विद इन टैली। सेकंड थिंग इज दैट हाउ डू द अकाउंटिंग एलोकेशंस मूवमेंट, राइट। देन थर्ड इज स्पेसिफिकली हाउ डू इन्वेंटरी मूवमेंट्स का, राइट। तो ये मैं फटाफट आपको छोटे छोटे उससे कर देता हूँ। Right. So now everything comes from actually select distinct name from ODS underscore voucher type. ये voucher type का जो मूवमेंट है ना, ये डिटेल्स, ये जो है इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है ना, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम, अगर आप इसको नेम को लगाओगे तो ऐसे आ जाएगा, राइट। ये आपका आ गया। तो ये मैंने किया और इसको अगर मैं ऐसे चलाऊंगा, ये एग्जीक्यूट करूंगा। So you see select distinct name, but what we are interested in select distinct, इसको हम लोग ले करके ये करेंगे कॉमा कॉमा, ये क्या कंट्रोल सी, क्या ये कंट्रोल वी, राइट। एंड देन आई से सेलेक्ट स्टार। अब इस स्टार में व्हाट यू हैव इज, ये देखिएगा ये स्टार आ गया ना। सो इफ यू कीप द स्टार हियर, so you see this name and this is the parent, but what we are interested in is these two fields, fx stock and is active. So the rule is that if is active is yes, then it should impact your balance sheet and the revenue accounts, right? And if is active is no, then it will not impact your balance sheet and revenue accounts. If FX stock is no, then it is not going to impact your then this thing. So let's start with this. So select distinct from voucher type. This thing where voucher type name, right? Where FX stock is equal to and is active is equal to no, right? If I get this, इससे जो है मुझे जो है एक व्यू मिलेगा which is going to be primarily purchase order, sales order. तो अगर आपके कोई भी purchase order, sales order या workout listing हो, वो आपको इससे मिलेगा। So how you exactly get it is where ये वाले वाउचर टाइप नेम्स मिल जाएंगे आपको। FX stock is equal to no and is active is equal to no। ये आपको देख के मैं बता दूंगा कि देखो ये देखिए ये वाले वाउचर टाइप्स हैं, वर्कआउट ऑर्डर, अटेंडेंस, पेरोल, सेल्स ऑर्डर। तो इफ यू हैव दोस पीपल, सो दे विल नॉट इम्पैक्ट योर बैलेंस शीट, दे विल नॉट इम्पैक्ट योर प्रॉफिट एंड लॉस, बट ये जो है ये वर्कड ऑर्डर। तो मैंने इसको क्या किया, मैंने यहाँ पे किया क्रिएट व्यू वी डब्ल्यू अंडरस्कोर, ये एक मेरा व्यू आया ऑर्डर, क्योंकि ये मेरा ऑर्डर का आ गया ना, इसमें ऑर्डर एज सेलेक्ट दिस थिंग, ये मैंने कहा ये सिंपली ये मैंने क्रिएट कर किया तो ये कंप्यूटर। अब मैं दूसरे वाले पे आया, मैंने इसको कॉपी किया, राइट। और अब मैं क्या करूंगा, मैं क्या आऊंगा क्रिएट व्यू दिसिंग व्यू अकाउंटिंग एलोकेशंस, अकाउंटिंग एलोकेशंस। जब मैं अकाउंटिंग एलोकेशंस पे जाता हूँ एंड इफ आई लुक एट दिस एंड इफ आई से इज एक्टिव इज यस, मतलब मेरा ये इज एक्टिव इज यस। अगर मैं इज एक्टिव इज यस देन आई गेट ऑल दी सेल्स नोट, क्रेडिट नोट, जनरल। और अगर मैं इस इफेक्ट स्टॉक को यस कर देता हूँ, माफ करिएगा, इफेक्ट स्टॉक को यस कर देता हूँ, इज एक्टिव इज यस, तो मुझे व्हाट डू आई गेट इज आई गेट द स्टॉक जर्नल एंड फिजिकल जर्नल। सो नाउ इट is active is yes, but the stock journal will not actually ये inventory calculations में आएगा, but the stock journal and the physical stock entries will not impact your balance sheet and profit and loss. But if it is no, अगर FX stock is no, then it is going to impact your balance sheet and the profit and loss, contract, debit note, credit note, general, payment, voucher, receipt, and sales, right? तो ये जो है अभी तक का
Then I come in here. So this will all impact sales, receipt, this thing. But if I have it, FX stock is equal to yes, and is active is equal to yes, then I will not be able to. So if I get select star from ODS voucher type details, so this is going to be stock general and physical stock. So this will not impact profit and loss, but inventory valuations will impact it. So anything to do with the accounting allocations, what we would say is active is yes. And this thing is तो ये आपका second view आ गया create view, ठीक है ना? Okay. Then I want to know that what happens. FX stock is now I say FX stock is yes.